होते हैं। सिंपल पेंडुलम की वजह से फिर फर्स्ट कंपाउंड पेंडुलम अगर सिंपल पेंडुलम को इसी से सॉल्व कर देंगे। कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। Say if you have any arbitrarily shaped body and oscillating about a fixed point, center of mass का distance d है, moment of inertia about this point is IP. And period T is IP upon MGD. फिर हम सिंपल पेंडुलम है इसका स्पेशल केस। Because हमने string को massless लिया तो center of mass lies on the pendulum D, which is length of pendulum. Time period can be written as moment of inertia mn square upon or you can say that L is distance between point of suspension G effective is net value of acceleration. The net value of acceleration means कि अगर हमारे पास ऐसे pendulum oscillating between capacitor plates. इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? Because in addition to weight acting downwards, an electrostatic force also acts QE perpendicular to it. So net acceleration is G square plus QE by M का whole square.
इधर अगर हम पॉजिटिव बॉब लेंगे, mg is downwards, qe is also downwards. So net acceleration is ge plus qe by m. Where E in all cases is electric field intensity between the capacitor plates, sigma by epsilon naught. Similarly, you can have an elevator. Pendulum and accelerated reference frame. Frame accelerating horizontally. For example, if it's in a pendulum oscillating in a car moving on circular track. Pendulum oscillating. In a car moving on circular track. A will be equals to V square by R. Lift accelerating upwards, pseudo force will be downwards. P will be 2 pi under root. For lift accelerating downwards. We say G is acceleration due to gravity. A is acceleration of reference frame. जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? Because it can be at some angle also. So magnitude of g minus a, because if acceleration is a, the pseudo acceleration will be minus a. So g और minus a का vector sum और उसकी magnitude.
Time period of pendulum. If length is very large. तो जनरल फॉर्मूला क्या था? बिकॉज हमने दो केस किए थे, इफ लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड इफ लेंथ इज इनफाइनाइट. लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ में क्या था और लेंथ इनफाइनाइट थी तो क्या था? इफ लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, फिर फॉर्मूला क्या था? एंड इफ लेंथ इज इनफाइनाइट तब फॉर्मूला क्या था? सो जनरल फॉर्मूला पहले, if length of pendulum is very large, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा? डेरिवेशन याद है कैसे की थी? If length of pendulum is very large, say radius of earth, or the pendulum oscillating near the surface of earth but its length is large. अब बता सकते हो क्या फॉर्मूला आएगा? E is equals to 2 pi under root. So if L is equals to infinity, 1 by infinity will be 0. So इसलिए जनरल फॉर्मूला याद रख लेना, इससे सारे ड्राइव हो जाएंगे. वट एवर बी द लेंथ, बिकॉज दे कैन से लेंथ इज इक्वल्स टू r by 4 और लेंथ इज इक्वल टू r by 2, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है जब आपको जो भी लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हो. नेक्स्ट can read इस पर न्यूमेरिकल लिखो एक. Let's see. जनरल है SHM का. A particle is executing SHM. A particle is executing SHM on a straight line. A and B are 2 points at which A and B are 2 points at which A and B are 2 points at which velocity is 0. It passes through a certain point P with a speed of
3 meter per second. At t is equals to 0, 0.5 seconds, 2 seconds, 2.5 seconds, 4 seconds, 4.5 seconds. Determine the maximum speed. Determine the maximum speed of the particle and the ratio AP upon PB. And the ratio AP upon PB. And the ratio AP over PB. So हमें A and B दो points दिए हैं जहाँ पे velocity 0 है. Means A and B are the extreme points because extreme points पे velocity 0 होती है. So body is executing SHM. ये दो points हैं. A and B जहाँ पे हमें दिया है कि velocity is 0. फिर हमें एक point P दिया है. At which velocity is 3 meter per second. At time t is equals to 0, 0.5 to 2.5, 4 and 4.5. So इन सारे times पे जो velocity है there is 3 meter per second. तो हमने बताना है maximum velocity कितनी है, means when it crosses the mean position. और AP upon PB की ratio कितनी है? Ratio of AP over PB and maximum speed. कैसे करें? बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, हमें दिया पहले t is equals to 0 पे यहाँ था, से मान लो इधर जा रहा था, दोबारा इधर पहुंचा t is equals to 0.5 सेकेंड है, मतलब ये टाइम 0.5 सेकेंड है, then it moves to the other end. और फिर इधर पहुंचा 2 सेकेंड्स में. ये 0.25 सेकेंड्स लगे इधर से इधर जाने में, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है दिस इज 0.25 सेकेंड्स, और ये जो टाइम इंटरवल है दिस इज 0.5 से 2, so this will be 0.75 seconds. अगर इसमें सिर्फ टाइम पीरियड ही पूछा होता, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया? एक ऑसिलेशन पूरी करने का टाइम, मतलब आप सिंपल देखो ना, यहां से शुरू हुआ 0 पे
और 2 सेकेंड्स पे दोबारा ये आ गया, तो हमारे को ये तो क्लियर है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज 2 सेकेंड्स। मतलब इस पॉइंट से यहां तक जाने का कितना टाइम हुआ फिर, ओ से पी तक? बिकॉज ये 0.5, यहाँ से यहाँ तक 0.5, फिर 0.5 वापस 0.5 एंड 0.5। ओ से ए तक जाने का टाइम हमारे को पता है। अगर टाइम पीरियड जो है इट्स 2 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ओ टू ए इट्स t/4, 1/4 ऑसिलेशन है वो। मतलब टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ओ टू पी इज 1/4 seconds। ये टाइम भी 1/4 सेकेंड है। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड रेशो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा पहले? इफ वी यूज द इक्वेशन v is equals to ये इक्वेशन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, पहले तो ये बताओ। v is equal to a omega cos omega t। बिकॉज अगर मैं यहाँ से मोशन शुरू करता हूँ, इधर तक जाने का टाइम मेरे को ऑलरेडी पता है, मेरे को स्पीड पता है, एम्पलीट्यूड नहीं पता, ओमेगा आई नो, so 3 is equals to a into 2 pi by t, t is 2 seconds, cos pi by 4। ए पता चल गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा। कुछ मिसिंग तो नहीं है? पाई। A is equals to 3 into 2 by रूट 2/2 कट जाएंगे। 2 कट जाएगा, हाँ ठीक है। So a की वैल्यू इधर डाल देंगे तो यू विल गेट दैट 3√2/पाई। मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं y। अगर मेरे को वेलोसिटी पता है तो मैं y निकाल सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास एक और रिलेशन है। यहाँ से y निकाल लोगे तो यू विल गेट द रेशियो, बिकॉज v पता है, ओमेगा पता है और a पता है।
So y निकाल लोगे तो you will get the ratio AP by BP. Next लिखो. A particle moves along x-axis. A particle moves along x-axis such that its acceleration is given by a is equals to minus beta into x minus 2. A is equals to minus beta into x minus 2, where beta is positive constant and x is position coordinate. Where beta is positive constant and x is position coordinate. A part is this motion SHM? And if yes, find its time period. And if yes, find its time period. Easy question है तो कर दो जल्दी से. And if yes, find its time period. अगर ये SHM है पहले तो चेक करो SHM है कि नहीं and then find its time period. X is the position coordinate. बॉडी जब यहाँ पे कहीं पे ऐसे एट अ डिस्टेंस x, इस पॉइंट से डिस्टेंस x है. x is equal to 2 से डिस्टेंस x minus 2 हो जाएगा. अगर x is equal to 2 से डिस्टेंस x minus 2 है एंड मैं इसको मीन पोजीशन लेता हूं तो x minus 2 फिर क्या है? इसे फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स is 0 और a is 0 implies x is equals to 2 meter represents mean position. And x minus 2 is displacement from mean position. तो अगर मैं x minus 2 को लेता हूँ कि if x minus 2 let it be x dash, we can say a is equals to minus beta x dash, where x dash is the displacement from mean position, so motion is simple harmonic. Motion is simple harmonic, but mean position is not a region. Mean position is x is equals to 2. तो time period फिर क्या हो जाएगा? Time period will be 2 pi under root displacement upon magnitude of acceleration. This will be the time period of oscillations, 2 pi by under root beta. सिर्फ mean position और region नहीं है ना, mean position is x is equal to 2, otherwise motion is simple harmonic.
Next, right. A particle is performing SHM. A particle is performing SHM with time period t. At an instant, its speed is 60% of its maximum value and is increasing. And after an interval delta t, its speed is 80% of its maximum value and decreasing. And after time delta t, its speed is 80% of its maximum value and decreasing. Find the smallest value of delta t. Find the smallest value of delta t. हमें एक पॉइंट दिया है जहाँ पे स्पीड इज 60% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इंक्रीजिंग, अनदर पॉइंट इज 80% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड डिक्रीजिंग. स्पीड इंक्रीज करती है व्हेन द बॉडी मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड डिक्रीज करती है इफ इट्स मूव अवे फ्रॉम मीन पोजीशन. सो हमें पहले केस में दिया है स्पीड इज 60% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इंक्रीजिंग. से मान लो यहाँ पे कहीं पे है बॉडी, the speed is 60% of maximum value and it's moving towards mean position. इसके बाद जब ये इधर आएगी, इसकी स्पीड इधर यहाँ तक बढ़ेगी, फिर ये कम होनी शुरू हो जाएगी. इस पॉइंट पे आके कहीं पे P2 पे हमें दिया स्पीड इज 80% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू और ये दूर जा रहा है तो इट्स डिक्रीजिंग. P1 से P2 आने तक टाइम लगा डेल्टा T. वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा T. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल T. इधर स्पीड है 0.8 टाइम्स V max, मतलब 0.8 इंटू ए ओमेगा. यहाँ पे 0.6 इंटू ए ओमेगा. हमें डेल्टा टी बताना है, P1 से P2 जाने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा. V is equal to a omega cos omega d. So 3/5 is equals to cos omega d. Cos की वैल्यू हमारे पास है 3/5. Similarly, so 4/5 cos omega t2. तो t2 minus t1 बताना है कितना है. t2 minus t1 because values ऐसी दी हैं कि you can find.
क्या आएगा आंसर? बिकॉज ओमेगा T1 की वैल्यू आ रही है 53 और ओमेगा T2 की वैल्यू आ रही है 37. तो बता दो, इजी हो गया अब तो क्वेश्चन. एक बार ये बॉडी इधर है, मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रही थी. Started from this point. एक बार बॉडी है, it's at 0 point V max and it's moving towards mean position. मतलब ये वाला point P1 है कि body is moving towards mean position because it's moving away from mean position. दूसरी बारी है 0.8 and it's moving away. It's moving away. So P1 से P2 आने का टाइम. P1 से P2 आने का टाइम. अगर एक एंगल 37 है, एक 53 है, तो दिस विल ऑलवेज बी 90. तो 90 डिग्री एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? Phase difference between 2 points is pi by 2. Implies time taken as so delta T is T by 4. Delta T will be T by 4. Next. A square plate of mass m and side length L. A square plate of mass m and side length L is hinged at one of the vertex. Is hinged at one of the vertex and free to rotate about it. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. You have a square plate.
hinged at one of its vertex. So this is square plate of edge length L. इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है. सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ लाई करेगा, ये डिस्टेंस d. अगर मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एज क्या होता है? अबाउट सेंटर ऑफ मास दिस विल बी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ml square by 6. Moment of inertia about 1 inch. ये डिस्टेंस कितना होगा? Time period will be 2 pi under root 2 ml square by 3 into mg into L by 2. Next, right. In the figure shown, if the ball is given small lateral displacement, the ball is given small lateral displacement, show that its motion is SHM and find its time period. Neglecting. या neglecting की जगह लिख दो and assuming that change in tension is due to lateral displacement of the ball only. Change in tension is due to lateral displacement of the ball only.
हमारे को ऐसे गिवन है इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड छोड़ दिया. यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. You displace it slightly through small distance and find its time period. आंसर टी की टर्म्स में दिया उन्होंने कि दिस टेंशन इज टी. सो टी की टर्म्स में आंसर निकाला हुआ. You displace it through small distance x. क्योंकि मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं. So we can say that net restoring torque, oh sorry, force, F net minus 2d cos theta or acceleration is for SHM. And time period is 2 pi under x by mod a. So ml by 2t. Next you can write a disk of mass capital M and radius r is pivoted at its center and free to rotate in vertical plane. And free to rotate in vertical plane. A particle of mass m
is stuck on the circumference of disk. Find frequency of oscillation about its mean position. Find frequency of oscillation about its mean position. यहाँ पे एक पार्टिकल है, मैं डिस्क का मास 2m है, रेडियस r है, इट्स पिवोटेड एट इट्स सेंटर, यहाँ से फिक्स्ड है, हमने इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कुछ निकाल लो, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू स्मॉल एंगल, बिकॉज ये यहाँ से फिक्स्ड है स्मॉल मास, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट दिस पॉइंट. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. Find frequency of oscillation. अगर मैं इसको कंपाउंड पेंडुलम लूं तो 2 पाई अंडर रूट आई अपन एम जी डी, आई कितना होगा? The moment of inertia would be, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डिस्क का इट्स हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल मास का इट्स एम आर स्क्वायर. एम हमारे को दिया है इट्स 2m. डी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा इस सिस्टम का? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. ये 2m, ये m, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लेता हूँ 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस r, तो सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास विल बी at a distance of r by 3, because minus r by 3 पे आ रहा है. So t is equals to 2 pi under root ip upon mgd. मास कितना ले? m 2m या 3m मास? बिकॉज d की वैल्यू r by 3 है, तो मास कितना ले? 3m 3m, बिकॉज तीनों सिस्टम का मास लेना होता है, तो 3m इंटू g इंटू r by 3, 2 pi under root 2m r square upon mgr. फ्रीक्वेंसी बतानी थी तो 1 अपॉन 2 पाई g by 2r.
Next, you can write two ideal springs having same spring constant K. Two ideal springs having same spring constant K are connected as shown in figure. The rod PQ is massless and the block has mass M. The block is pulled down a little and released. Block is pulled down and released. Find the time period of oscillation. Block is pulled down and released. Block is pulled down and released. 8-minute question. Sorry, time period there. Block is pulled down and released, and its time period is 2 pi under root m by 3k. Find the difference in heights of A and B. If it is given that natural length of spring BD is L. If it is given that natural length of spring BD is L. Natural length of spring BD is L. स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया है कि एक ही मटेरियल के बने springs are of identical material और हमें इसको दिया है कि इसको पुल किया दिस रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इसका टाइम पीरियड दिया है 2 पाई अंडर रूट m by 3k अगर एक ही मटेरियल के बने हैं पर लेंथ डिफरेंट है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा जो k दिया है दैट इज की अगर दोनों की लेंथ भी सेम हो तो सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है सो दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल अगर मैं सिंपल एक ये पूछूं कि दोनों स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है स्प्रिंग्स
अगर सीरीज पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग्स इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है और कब होते हैं? सो इट्स k1 प्लस k2. हमें वो दिया है क्वेश्चन में, इट्स 3k. एक हमारे पास कंसेप्ट होता है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो अगर टोटल 3k है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मटेरियल सेम है, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k और एक का 2k. हमें ए और बी में हाइट डिफरेंस बताना है कितना होगा. अच्छा, ये रेशो भी अगर मैं आपसे पूछ लेता, आरसी और आरडी की रेशो, आरसी और आरडी की रेशो, बिकॉज चेंज इन लेंथ सेम है. इसमें रिस्टोरिंग फोर्स kx, इसमें 2kx. as change in length is same for rod to remain horizontal. Springs are in parallel. Net torque about R should be 0. Means kx अब हमने लिया कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, एक का k, and spring constant is inversely proportional to length, implies if length of BD ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, length of AC is 2L, difference in height will be L. Difference in height of A and B is L. Next, find time period of oscillation of the system shown in figure which consists of rod of length L and a massless thread PB. If end B
of the rod is pushed perpendicular to the plane of figure. If end B of the rod is pushed perpendicular to the plane of figure. ऐसे रॉड को थ्रेड के साथ हैंग किया हुआ था, इसको थोड़ा सा पुश किया एंड छोड़ दिया. You have to find its time period of oscillation. So इसको रॉड को ऐसे पुश किया है या ऐसे ऑसिलेट कर रही है मतलब, because it's pushed perpendicular to the plane of figure. Find its time period of oscillation. कैसे करेंगे? बिकॉज हमें ये एंगल, ये जो सारी वैल्यूज दी हैं, ये इस एंगल को निकालने के लिए दी है. तो थीटा दिया है 37 बेसिकली. वो डायरेक्ट भी दे सकते थे कि थीटा 37 है. So you have to find its time period of oscillation. Moment of inertia of rod क्या होता है? If it makes small angle theta. अगर मेरे को IA निकालना है, moment of inertia about this point, because then you can use the formula for compound pendulum. 11th में formula derive किया था, moment of inertia of rod if it makes an angle theta with the axis. याद है किसी को फॉर्मूला? हमने इसका फॉर्मूला निकाला था 11th में. इसे रॉड makes an angle theta to moment of inertia about y by dash. अगर हमने यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली थी dm, ये डिस्टेंस लिया था x, ये था x sin थीटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था dm into x sin थीटा का होल स्क्वायर, where dm was m by l into dx into x sin theta का whole square. It was m by l sin square theta x dx. X varies from 0 to L. तो
x square dx. तो ml²/3 sin square theta फॉर्मूला था, वो डायरेक्ट इसमें लग जाना था, 2 pi under root I upon mgd. So 2 pi under root I is ml²/3 into sin square 37 upon mg into L/2. So this will be answer. सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/2 होगा, सो फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाना था. नेक्स्ट, इसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, आप टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा से भी, बिकॉज टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा से करोगे तो भी यही आंसर आएगा. टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा से करें तो कैसे करेंगे? आई तो हमने निकाल लिया, अगर मैं इसको टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से करूं, अगर आप हर बार कंपाउंड पेंडुलम से नहीं करना चाहते तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से कैसे कर सकते हो? आई तो हमने निकाल लिया, if you displace it through small angle theta, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? इस पर टॉक कितना लग रहा है? इफ यू डिस्प्लेस इट थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, तो टॉक कितना लगेगा? टॉक एक्टिंग ऑन इट, टॉक विल एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का टॉक कितना होगा? mg/2 sin थीटा इंटू थीटा. जो मेथड आसान लग रहा है उससे करके देख लेना, अगर आपको वो आसान लगता है उससे कर लो, बिकॉज टॉक ड्यू टू ग्रेविटी है कि इफ यू डिस्प्लेस इट, 3D फिगर बनेगी, इसलिए फिगर नहीं बन पाएगी बिकॉज 3D में जाएगा ये. इट डिस्प्लेस थ्रू स्मॉल एंगल, किसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, तो आपको टॉक ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी mgl/2 sin थीटा नॉट इनटू थीटा. थीटा नॉट जो ये इनिशियल एंगल है, उस अकॉर्डिंगली, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, वेट इसका एक्ट करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे. ये डिस्टेंस अगर L/2 है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सो दिस विल बी L/2 sin थीटा नॉट. नेक्स्ट, स्प्रिंग का टाइम पीरियड नॉर्मली क्या होता है? से स्प्रिंग पेंडुलम है तो टू पाई अंडर रूट m by k if mass of spring is considered. If a massless spring,
बहुत रेयर यूज होगा वैसे फॉर्मूला. Mass of spring is considered. Series में restoring force in springs is same. So ये parallel combination है because change in length same है. इसका फॉर्मूला because ये two body problem हो गई. If mu is reduced mass. So इन फॉर्मूला पे बेस्ड करके देखना. असाइनमेंट शुरू किया है नहीं किया? अगर किया तो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ. असाइनमेंट कर ली शुरू? क्या भी नहीं की? करके देखना फिर इसको, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं. किया ऋषिक सॉल्व? नो सर अभी करनी है. ठीक है, इसको करके देखना फिर. बट 11th का रजिस्टर एक बार ही पढ़ के करना है SHM. फिर नॉर्मली इतने डाउट्स आएंगे ही नहीं. तो अगली बार करते हैं, फिर डाउट्स बता देना मेरे को जो भी आएंगे.